नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं तुंगभद्रा डैम की तरफ। देखते हैं, पहले भी बहुत बार आ चुके हैं यहाँ। देखते हैं इस बार अगर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है तो जाके देखेंगे। आज हमारे साथ हैं अब्बास भाई हमारे। देखते हैं सामने में क्या देखने के लिए मिलेगा। वी हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। अब्बास इज ऑलरेडी इन अ फोन कॉल विथ हिज वाइफ। लेट्स सी, these beautiful flowers will give good kind of a vibe and the ambience. See, this is the way we have to go to see the water stored in the dam. Let's go guys, let's see. Earlier we have been here. The reason why we are going today is just to see if we get any changes to see. Let's see what all the things we are going to see today from our eyes. This dam is called as the second biggest dam in our Karnataka, where it can be stored. This dam stores about 1 lakh cusecs of water in this. And then let's see how much we can explore over here. This is the way to reach. चल के बुरा हाल हो चुका है हम दोनों लोग का, और अब्बास का भी हाथ बुरा हो चुका है बहुत। कर्नाटक का डैम है, कर्नाटक का मुंड्राबाद डैम बोलते हैं इसको। वहां से चल के बस हो गया है यहाँ तक चल के। और कितना बोल के चलना बोलो? चलना और थोड़ा दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। थक गया वही। इधर से इधर तक चले गया तो हो गया डैम खत्म। ऊपर से दिख जाएगा हमारा डैम। और अब्बास भाई, क्या ख्याल है आपका डैम में? बहुत बढ़िया है यार। देखते हैं, चलो ऊपर जाके। This dam, so you can see when it was created and all the information and this beautiful graffiti over here. Let's see what Abbas tells. This is the person, Thirumala Iyengar, who has built this dam. He was a BEMIE from Madras. के बाद में इन्होंने ही इनॉग्रेट भी किया था। और ये देखो अभी ये ब्यूटीफुली, और ये है डैम। देखिए जब ये डैम भर जाता है ना, नज़ारा दिखने लायक लगता है।
डैम देखने के लिए पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जब डैम भरने के बाद देखने का जो मज़ा है ना, बहुत ही अच्छा है। Earlier also we have visited this dam. They have created a good amount of so that people can rest here when they are tired. They have made a good kind of benches, these and that, just to sit here and there. We are also tired just because we have walked so long from there, about 3 or 4 kilometers. These are the benches that they have created just to sit from here to there. Let's see how long after it rains. It's really nice. Yeah, these you can see over there. From here we can see the whole dam. Where हाँ जी, ये है यहाँ का पावर हाउस, जो कि बोला जाता है कि इसमें से विद्युत उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के आजू बाजू वाले शहर में सिर्फ लाइट आ जाता है इसमें से, बस इतना ही सही इसका काम है। और इसके बाद में से पानी यहाँ से वहाँ निकल जाएगा, वो बाहर की तरफ, और चले जाएगा बाहर की तरफ। This park is little different. We have come here near the park where these are called fountains. ये है fountain, जो fountain
Okay. Ready? All ready.
वेरी मीन है। एंड अगर आप सबको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना भूले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।